इसमें एक क्वेश्चन जो मेरे को ये पूछना था कि जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो नाउ देयर आर सो मेनी स्कीम्स इन द मार्केट एंड सो मेनी एएमसीज, आई थिंक देयर आर लाइक 40 प्लस एएमसीज. व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि कोई रिटेल इन्वेस्टर जो है देख रहा है, हाउ कैन दे सिलेक्ट द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर देम एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दे शुड कंसिडर बिफोर सिलेक्टिंग कि ओके ये फंड में इन्वेस्ट करना है. So first and foremost, I can tell you what they should not do. हाँ, ठीक है. Okay? Go to ChatGPT and ask which are the best funds. Because the ChatGPT is going to give you an answer. Yeah? Or AI is going to give you an answer based on actual returns over the last 1 year or 3 years, depending on which AI you're referring to. Okay? And I'm purposely saying this because I'm not saying AI is bad. Okay? There is a reason for it. AI picks up what is there in the universe and gives it to you in a simplified format. That is what AI does. Finally, you have to use your human brain to decide what is right for you or wrong for you. I remember your niece had asked AI, Yes. right? And then I told her 1 week later, my niece called me up, says that, and then I told her 1 week later, you re-ask the same question to the same AI engine that you spoke to. And are you getting the same funds or are you getting different funds? And if the funds are different, then somebody should ask a question, right? कि एक हफ्ते या एक महीने पहले ये फंड थे और अभी ये फंड है, ऐसा क्यों? तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए. तो ये पहली बात हो गई, ठीक है? सेकंड, मैं ये नहीं बोलता हूं कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना नहीं चाहिए लोगों ने, ठीक है? देखना चाहिए, बट यूज इट एज अ रेफरेंस पॉइंट, नॉट अ डिसीजन टू बाय. एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है? दूसरा है read. आजकल everything is available on the internet. So don't read one article. Read 5 or 6 differing views in 5 or 6 different journals or 5 or 6 different podcasters or 5 or 6 different financial experts who are talking about it. So you get a rough idea about what you should buy, what you should not buy. Third, most important, कि what is the comfort you have with the brand? ये बहुत important है, ठीक है? I'm not saying that a small brand is bad. I'm saying a small brand can be, but you should have a comfort with it. उसका philosophy क्या है? ठीक है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? और आप फिर बताइए कि इसमें से लोग कैसे समझ पाएंगे, बिकॉज थोड़ा डिटेल हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई मेनी अ टाइम्स आई फील डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन may not be the right decision. Okay, while it is cheaper, it may not be the right decision. Okay, and I'll give you a second example on that. Actually, I'll give that example first, right? Every one of us pays income tax, all those who are earning money. Correct? Do we go on the income tax portal and file our returns directly? We generally use the services of a chartered accountant. You're right? Yeah. Huh? Why? Because there is somebody who helps you navigate that. And most importantly, आगे जाके अगर query है income tax से, that person then becomes responsible to answer that query as a chartered. You are a chartered accountant. I mean, I don't need to tell you that. But the effectiveness of a chartered accountant is not in filing of the tax. The effectiveness of a chartered accountant is to also handle anything that comes in post-tax filing. Yeah. Similarly, while we can do our research on our own, sometimes you need outside help to guide you in what is the way, especially if you are a newcomer or you're not understanding. So the first example I was going to give you, 3 मिड कैप फंड्स है, ठीक है? तीनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 19-20 का फर्क है, ठीक है? एक मिड कैप फंड है जो 25 स्टॉक चलाता है, दूसरा है जो 50 स्टॉक चलाता है, और तीसरा है जो 110 स्टॉक चलाता है, ठीक है? कौन सा लोगे आप? ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कितने लोग ये समझते हैं? बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि 25 स्टॉक वाला जो बंदा है उसका कंसंट्रेशन हर स्टॉक में बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो उसका जनरली देखा जाएंगे ना, जनरली, नॉट इट इज नॉट अ थंब रूल, ये फंड का वॉलेटिलिटी ऐसे होता है, because markets are never stable. Markets will go up and down. But when the markets are bad, typically a concentrated portfolio gets hit more. ठीक है?
as compared to a diversified portfolio. If I'm willing to take that risk, no problem. Go in for the 25 stock portfolio. But if I'm not willing to take the risk, then I need to look at a 50 or 110 stock portfolio. That I think is the crux of the matter when it comes to selection of funds, which fund to select, how to select. तो हम लोग फिलॉसफी ऑफ द फंड हाउस समझते ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, समझते ही नहीं है. ठीक है, हम सिर्फ रिटर्न चेस करते हैं, एंड दैट आई थिंक इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ इट व्हेन यू आर चेसिंग रिटर्न्स. यू नो, कल मैं एक हर्षा भोगले का पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें वो एक नरेट कर रहा था, वन ऑफ द इंग्लिश क्रिकेटर्स, फेमस क्रिकेटर्स, बात कर रहा था उससे और बोल रहा था कि वी टेक अ प्लैंक ऑफ वुड विच इज 20 feet लॉन्ग and 3 feet wide and put it on the ground and ask people to walk on that plank of wood, and some people run, some people dance, some people क्या बोलते हैं, रैम्प वॉक करते हैं. But now you put this plank up 100 feet in the air between two buildings and secure it tightly and then ask the same people to walk that plank. आपका बिहेवियर चेंज होगा या आप वही बिहेवियर करोगे जो पहले करते थे? फंड था लाइक दैट. तो आप फिलॉसफी अगर जानोगे ना, हाँ, तो आपको पता लगेगा कि आपकी फिलॉसफी और फंड हाउस की फिलॉसफी मिलती जुलती है या कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है. तो मैं ऐसे फंड्स में शायद ना निवेश करूं बिकॉज मेरा रिस्क प्रोफाइल उतना हाई नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट philosophy is bad, don't get me wrong, it's a philosophy, every philosophy is good, but you need to understand the philosophy, how it is. There are funds which churn portfolios every 2 months. There are funds which are more buy and hold. Obviously जो churn करता है, if he strikes it good, then his returns outperform the rest of the, but then he is God. So are you willing to take those kind of risks that are there? तो आपने देखा रहेगा अभी तक मैं काफी रिस्क के बारे में बात करता हूँ जो बहुत कम लोग बात करते हैं. राइट. दैट इज हाउ इट इज. तो डू यू रिकमेंड दैट कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं वो वाले फंड्स उनको बेटर होंगे जहाँ पर उनको लाइक वोलेटिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू लेट्स से, जैसे आपने बताया कि चर्न अगर हो रहा है 2 महीने में तो इट इज रिस्की, बट एट द सेम टाइम वो रिटर्न्स ज़्यादा दे So सकता है. अगर as a youngster you're willing to take that kind of return, then there is absolutely no problem. You can get into those funds, right? So there used to be funds with 10 stock portfolios and 20 stock portfolios. They are like portfolio management, right? But they are funds with 20 stock portfolio. I'm not saying they're bad, except that the risk is higher. That's all that I'm saying. Right. But we should evaluate that when buying funds. So once you use these filters, वो 1000-3000 स्कीम जो है वो ऑटोमेटिकली 30 हो जाते हैं. और जब 30 हो जाते हैं then it becomes simpler to choose the 5 that you should invest in. Right. Ideally, you should not over diversify. I have clients who have 50, 60, 80 schemes in their portfolio. और मैं पूछता हूँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बोले नहीं वो नया फंड आया था तो मैंने खरीद लिया. I said how does it help you? बिकॉज आपके पास एग्जैक्टली यही फंड 4 और पोर्टफोलियोज में है, तो इससे क्या फर्क? नहीं, नया था 10 रुपए में था. ऐसे सभी 10 रुपए में होते हैं बिकॉज इट्स ऑल NAV बेस्ड, राइट? तो यू हैव टू कीप टॉकिंग टू देम एंड कीप एजुकेटिंग देम ऑन दैट इशू.